Hi Khushbu, how are you? Hi Paresh, I'm good. How are you? बस बढ़िया, आप बताओ कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। बस सब बढ़िया चल रहा है। गुड। क्या कर रहे हो फिर आजकल? तो आजकल मैं फ्रीलांस ही कर रही हूँ. सो आई लुक अप टू द ओके। स्मॉल स्केल ना प्रोजेक्ट्स. मोर ओवर लाइक रेसिडेंशियल कंपैरेटिवली टू कमर्शियल. So I mainly work ओके। for residential projects. Yeah. ओके। So first of all, Hmm. Khushbu, thanks a lot for joining us in the Chat for Designers video session. Thank you. And as you know that what we are going to discuss in this video, so let's quickly come up with your intro, what all you do, what is your background, and then we can come up with the question here. Okay? Sure, sure. Yeah. So So over to myself, you. Khushbu, and I am from Bangalore. So right now I'm freelance ही कर रही हूँ मैं फिलहाल. So I prefer working with small scale, projects जो होते हैं. Okay, that's good. That's Yeah. lovely. So, Khushbu, can you tell me like what all services do you offer to your clients or Okay. customers? Being a freelancer, so I would first like to know कि client को नया construction करना है या उनका कोई major renovation है या उनको कोई redesign करना है कोई specific area. तो Hmm. उसके बाद में जो भी area whatever they want to get it done, so obviously हम उनको floor plans भी देंगे. Then you have your layouts भी दिया जाएगा, detailings दी जाएंगी, renderings दी जाएंगी. So basically all the things जो basically a designer दे अपने client को वो जो देना चाहता है. So these are the things, the basic step जो एक client भी चाहता है कि हाँ हमें क्या क्या provide किया जाए. So mainly floor plans, detailings, renderings and layouts वगैरह सब दिया जाता है. Okay, got it. Hmm. Okay. So, matlab you are into also drawings, you are into Yeah, supervision somewhat, and you are also yeah, into the yeah, design planning. yeah. Okay, got it. So, खुशबू इससे रिलेटेड कि कस्टमर्स कभी आपको जब भी पूछते हैं कि यार ड्राइंग्स एंड ऑल जैसे हम लोग देखते हैं 2D ड्राइंग 3D ड्राइंग्स जो मिलती हैं. So my next Hmm. question is with that. Sometimes there are clients who ask you before even giving you their project or before even saying ki that we will be working with you, asking you that kabhi kabar clients while they have not even started working with you or they haven't paid you any advance, they talk like these ki can you please provide us a 2D design or can you give us a 3D design for a better imagination. So what are your views on that कि like करना चाहिए या ठीक है इसको हम एक स्टार्ट भी कह सकते हैं, we can start giving them for free and then client might think कि या इसका better imagination है जो मैं चाहता हूँ ये वो कर पाएगा. तो what are your views on that? So I think obviously first you're gonna meet up your client, उनकी requirements will get to know. So obviously they're gonna ask you for 2D and 3D drawings का कि हाँ आप दो. Hmm. But I think you need to, you know, 2D or 3D का obviously you're putting down all your effort on a sheet of paper, everything you're doing it. Like 2D, Exactly. you will see it will give you the complete, detailings देगा. 3D is a better option because you can just call it as a virtual puppet where everything is Hmm. under control and there's every movement. But I think you need to get charged even for that because I have an example where many clients they do this. तो वो 2D और 3D का बनवा लेते हैं. They will pay you, but then looking up to your budget कि हाँ इस एरिया का इस पूरे घर का इतना बजट बनेगा. So they'll be like yes we'll get back to you. They have the designs, so they'll get it done either by a carpenter or by some other firm. So I think 2D. Whichever might be coming in their range, I guess. Yeah, yeah. But Hmm. before that, before we are doing the 2D and 3D design, so it's very obvious we'll get to know कि उन लोगों का बजट कितना है. But budget के Obviously. बाद में भी मतलब कि उनको लगे कि नहीं 2D 3D because there are many people like being a designer. तो we do charge really high. जैसे rendering में बहुत time लगता है. ठीक है Obviously. एंड 2D में भी टाइम लग जाता है और देयर सम अदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए टेक्निकल इशू हो जाए सो ऑब्वियसली Hmm. यार ऊपर से डेडलाइंस भी होते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं सो आई थिंक 2D एंड 3D इज अ बेसिक थिंग फॉर द क्लाइंट टू नो कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हो सो यू आर पुटिंग इट ऑन शीट ऑफ पेपर एंड लेटिंग यू नो बट Hmm. देन फिर भी लोग कहते हैं कि हाँ विल गेट बैक टू कई लोग यस दे स्टिक ऑन टू योर आइडियाज एंड दे बी यस यू कैन गो Hmm. फर्दर प्रोसेस जो भी है on others like it's 50-50 I'll say कोई Okay. जाती है accordingly और कोई है कि हाँ we'll get back to you and they get the designs and they get it done either by a carpenter or by some other company. Perfect answer, Vibhu. Hmm. But I think it is okay for that 50% who are
paying you for a small amount for the Yeah, design or the yeah, 2Ds you have made. But what yeah, about those 50% who told you by words that we will be working with you once we understand the drawing part, but yeah. they don't? It What about doesn't. them? So what about them is like, obviously, you try your best, you sit with them, you have Hmm. multiple meetings, okay, Hmm. and you somehow, the main thing is you have to build a good relation with your client. We That have is to. where you can gain their trust. And वहां पे if you're, हाँ कि उनको ट्रस्ट आ गया कि हाँ this specific designer is going to work जो उन्होंने Hmm. बोला है, so I think Hmm. somewhere or the other yes, even they will 50 से 60% भी हो जाएगा, 70% भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो 100% में हो सकता है that yes 2D and 3D करके, so they can just follow according to जो हमने डिजाइन दिया है, and following up with their designs Hmm. also. Hmm. Hmm. It's Hmm. perfect, but the main thing is creating ठीक a है. good relation with such people Hmm. जो Exactly. Okay. Let's get back to the next question. While you are at a site, you're working on your client and site, you have to go somewhere else. आपको दूसरी site भी manage करनी है. So what do you prefer? You prefer to manage your sites yourself, or do you like to have your supervisors who will see at your behind? see, okay, being a freelancer and working on small scale companies, so the main thing Hmm. that I would see is time management. So this is Okay. where the time management plays a very important role. Like if Very you have important. multiple site visits एक दिन पे, so obviously वो deadlines हमारी होती है. And I think small scale residentials पे it's very not that easy, but you Hmm. can manage. ठीक है, but अगर if you're working for a huge space, I think supervisor Rakna, you're having a co-worker or your team is way better, because Hmm. obviously put down your ideas also. You have your team also. So obviously आपका एक idea, मेरा एक idea, तीसरे बंदे का एक idea है. So वो सबका डाल के we come up with one design. So even if I'm held up with some work, so I don't have to worry because I know कि yes, there's someone who's looking after, वो site पे है, वो देख रहा है काम, and I can get back to Hmm. him and just ask him what was the scene, कहाँ तक काम चला है, क्या हुआ है, आगे प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ. बट स्मॉल Hmm. स्केल में काइंड ऑफ like 50-50 you can see it's manageable, but on a huge space obviously you would look forward कि हाँ कोई साथ में हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा. सब आप अकेले नहीं संभाल सकते. You नहीं नहीं have a सही. bigger group. अकेले थोड़ा सा difficult रहता है. या ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. इन पर्सनल क्वेश्चन है कि while you have worked on the freelancing for 2 to 3 years अपने आप से, तो कोई एक ऐसा टिप जो अभी तक आपने जितने भी काम किया हो डिजाइनर्स के लिए कि यार ये करोगे ना तो थोड़ा सा आगे और बेटर रहेगा. एवरीबडी हैज देयर ओन लॉजिक्स. लाइक मैं करूंगा तो मेरे अपने लॉजिक्स आएंगे. तो मतलब किसी को ऐसे एडवाइस है किसी को वो नहीं देना, बट हाँ कोई भी एक ऐसी टिप जो आपके मन में हो कि ओके, इफ द तो डिजाइनर्स चूज दिस. as a freelancer, हम्म. what I personally think is, काफी हमने बड़ी कंपनीज देखी है, they have their own हम्म. factories, they have their own setup, and जब हम्म. drawings, production drawings जाती है, so हाँ. everything is systematic कि हाँ इतना बाय इतने का है, and everything is done. जो मैंने देखा है, when you work with carpenters, so जब ऑन साइट पे यू हैव अ क्लाइंट कि नहीं हमें ये नहीं आप चेंज करके दीजिए कुछ भी, हमें नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं आ रही, डजंट लुक्स गुड ओवर हियर, 3D में अच्छा लग रहा था. सो व्हाट हैपेंस उस टाइम डिजाइनर ये सोचता है कि क्या करना है, बट वन थिंग आई हैव लर्नड, कारपेंटर्स हैव प्लान बी ऑलवेज. उनके पास प्लान बी ऑलवेज. हमेशा. ठीक है, ऑलवेज. वो कभी नहीं डरते कि ओ अरे हमें फिर से निकालना है, वी हैव टू डू इट और समथिंग, दे ऑलवेज हैव अ प्लान बी. सो आई थिंक बीइंग अ डिजाइनर आई हैव लर्नड फ्रॉम मल्टीपल कारपेंटर्स कि अगर आपका ये नहीं, प्लान ए इजंट वर्किंग, सो मेक श्योर यू बी रेडी विद योर प्लान बी, सो दैट यू डोंट हैव टू हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट. एंड आपका हम्म. टाइम मैनेजमेंट और जो आपकी डेडलाइंस है, एंड आपने अपनी जुबान दी है कि यस वी विल डू दिस, तो वो कांस्टेंट रहेगा. प्लान ए काम नहीं, के प्लान बी नीड्स टू बी देयर फॉर यू. सो हैज इट एज अ डिजाइनर आई थिंक प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, बिकॉज वी गेट मल्टीपल क्लाइंट्स, और ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है कि द वर्क इज गोइंग ऑन एंड क्लाइंट को नहीं पसंद, कोई स्पेसिफिक डिजाइन और स्पेसिफिक एरिया उन्हें नहीं पसंद आया है, सो दे विल आस्क यू कि प्लीज चेंज कीजिए, यू हैव अ डेडलाइन, 1 महीने में करके दीजिए. सो यू नीड टू हैव अ बैकअप, ये नहीं तो वो. सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग इटसेल्फ यू नीड टू विजुअलाइज, यू नीड टू थिंक कि अगर ये अच्छा नहीं लगा तो यस आई नीड टू कम अप विद समथिंग एल्स, नहीं तो इसको ही मैं मल्टी फंक्शनल कर दूं कि जहाँ पे क्लाइंट को. हम्म. सो आई थिंक प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए. ओके. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई दैट प्लान बी इज द थिंग व्हिच यू शुड बी ऑलवेज रेडी आफ्टर एन ए.
आई थिंक प्लान सी भी Yeah. रख लेना चाहिए आजकल के टाइम को देखते हुए, हाँ हाँ बिकॉज yeah. समटाइम्स ऑल द थिंग्स गेट कैंसल्ड और आप उसके साथ भी तैयार रहें. Yes, yes, sure, definitely, obviously. या सो खुशबू, इट वाज रियली नाइस सेशन. आई थिंक हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को या डिजाइनर कम्युनिटी जितने भी लोग देख रहे हैं, दे विल ट्रूली एंजॉय दिस सेशन, बिकॉज काफी सारे फैक्ट्स और काफी सारे हमने पॉइंट्स क्लियर आउट करे होंगे डिजाइनर्स की तरफ से भी, और एज अ ऑडियंस की तरफ से भी या क्लाइंट्स की तरफ से भी होंगे. तो आई थिंक viewers must have a great time in the Yeah, session of Chat with Designers. And yeah. thank you for joining us in the session with the Thank on you. this Chat with Designers to provide us a good amount of knowledge. So I hope we will meet again on Yeah, the new concept with new set of questions. Okay. Till then, take care. Bye bye. Thank you. thank you. Take care.